Dear student, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. I am with lecture number 2 about this chapter number 17, some natural phenomena, and this is 8th science. And today I am going to discuss the following topics: electric charges, how their development takes place, electroscope device क्या होता है, और अर्थिंग व्हाट इज द टर्म अर्थिंग। इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर नंबर फर्स्ट इस चैप्टर के बारे में जो मैंने बताया, जब भी हम गिलास रॉड लेंगे, इफ वी ट्राई टू रब विद अ सिल्क क्लॉथ, तो वो क्या होता है, जो गिलास रॉड होता है इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्जड एंड द सिल्क क्लॉथ इज गेटिंग देयर नेगेटिवली इलेक्ट्रिकली चार्जड। क्या होता है असल में, क्या होता है, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दे स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू another object on a rubbing if we try to them to have a friction between the two different materials. Electrons always leave the objects and start accumulate in the other object, which two or more object we rub to each other. That means electron always removes and always start to accumulate in another object. It depends upon the properties, nature of that object. Now I will take the second example second in this. If we rub, if here is a rubbing of the, if we take here the plastic material, here it is a plastic material. Now this plastic material, if we plastic material, if we this plastic material rub with a polythene, if we rub it with a polythene से अब नाम इसको हम rub कर दे, it is a A, it is a material B, polythene. Here what we if there is a rubbing process, if there is rubbing, we rub the two materials, the two different materials. The plastic material get a negative charge. जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक you take the refill of the pen, you take the plastic pen, you take the refill of the pen, and then you are rubbing with this polythene piece, you will get the plastic get the negative charge, and the polythene in this get the polythene will get the positive charge. Again it is the किसने ऑब्जेक्ट लॉस किया है, यहाँ से सीधे पता चलता है जो पॉलीथीन है बी, पॉलीथीन जो है इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो इसमें कम क्योंकि कुछ नेगेटिव चार्जेस यहाँ से भाग के यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने ओब्वियसली देखा ज्यादा नेगेटिव चार्जेस बने, ये कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ उठे, यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए, इसने लॉस किया, इसने गेन किया, और यहाँ पे पहले से ही थे पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ पॉजिटिव चार्जेस कम थे और नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा थे, जिसके वजह से रब करने से नेगेटिव चार्जेस यहाँ पॉलीथीन बैग ने लॉस किए हैं रब करने से, और यहाँ एक्यूमुलेट हो गए, और प्लास्टिक जिसके वजह से प्लास्टिक क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनी, और पॉलीथीन जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करने से यहाँ ये पॉजिटिवली चार्जड बना। तो क्या है यहाँ पे, यहाँ एक्सेस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आ गए, एंड हियर इज द एक्सेस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस and less number of negative charges in the polythene, and hence it is it becomes electrically positive and plastic becomes electrically negative. Now it is the second example. In the previous lecture I rubbed the glass rod with. There are various other examples on rubbing. The object becomes electrically charged, one become positive, another become negatively, depends upon the nature of properties of the material which are we rubbing during the rubbing. And you should be noted that जो metallic और rods होते हैं, copper, zinc, aluminum, whatever metallic rods, we cannot charge them by rubbing. We need lot of energy to develop charges in them. Here there are the simpler particles, simpler things, simpler objects
which we can rub on rubbing, and they get charged. Here I will take here the heads. I will say you here an example. I take some bits of paper. Now I am trying to rub this. Here it is an example. Here I am rubbing this plastic pen with, but your hair should be dry, and here I will show, if I take a bit of paper. Here in this paper I take a bit of paper. Now it is a pen. I am going to rub it with a dry hair. On rubbing I charge this object. Now this is a little bit experiment I am going to show you here, in an experiment here. Now you see that bits of paper start to touch here. Here they start. Here your hair should be dry. Obviously I oil my hair in morning so that it not takes. Your hair should be dry first of all in order to rub. Now you see the result here. You see here is the attraction between the two objects here. Here the attraction is a bit of paper here or there. I will take the another pen. I will you show here the attraction between the, you show that there is an attraction between the object here, bits of paper here. With this there by rubbing we can develop charges in objects. Here there we can go further. Here I will take the concept of, what do you mean by the concept of transfer of charges. Transfer of electric charge. Transfer of electric charge. You know this device, as you know that this is the, I will show it here by the, what do you mean by electroscope. Electroscope is a device with which determine a charged object, whether it is positively charged negatively charged. इस डिवाइस से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट चार्जड है या अनचार्जड है, वो हमें इस इलेक्ट्रोस्कोप से पता चलता है. दिस इज द इलेक्ट्रोस्कोप. विद दिस इलेक्ट्रोस्कोप हाउ वी डिजाइन, लास्ट ईयर मैंने प्रीवियस ईयर जो है एज ए प्रोजेक्ट वर्क प्रोवाइड किया मैंने बच्चों को, बिल्कुल अच्छे से उन्होंने बनाया, डिज़ाइन किया था, और कुछ मैंने इलेक्ट्रोस्कोप लैब में रखे हैं एज इट वाज द लैब एक्टिविटी टू देम, और आप भी इस पे घर में बना सकते हो. you take a knob, metallic knob, we take it here, the metallic wire, and metallic wire you place a hook here, and here is also a metallic wire here, and it to this metallic wire, first of all, what is this? This is the metallic knob. How to design? It is a question also. Metallic knob, it is of suitable is of होना चाहिए brass या copper का. It should be of brass or it should be of copper or brass. Then it is a metallic wire. It is a metallic steel. Metal is a metallic wire. It is a best conductor of electric charge. Here is the two, and there is a needle. You should cross. There should be a two strips. There is a, and these two strips should be very very close to each other. It is a strips of aluminium. Aluminium is also, it is also a metal. Aluminium foil. Strips of aluminium foil, and there should be a least gap between the aluminium foil, and it should be a suspended. There should be a freely suspended. These should be a freely suspend. And here you develop a hook in this. It is a hook here. You should develop a hook in this here. It hook, and you should suspend on vertically downwards two strips of film. It is a arrangement here, and you keep this all the arrangement. You keep all this arrangement in a bottle.
all the arrangement you place in a, you can place all the arrangement in a bottle. Here it is a bottle. Yeah, we can say in a jar you can place this all the arrangement. It is a, then we place all the arrangement in a glass jar, but you should be aware of this portion should not touch. You should here place a wooden block here, so that here should be not be leakage of, here should be a wooden wood block, wooden block. The neck of the jar should be मतलब, and they should पर्स ये rod इसके बीचों बीच जाना चाहिए, और knob should be at the top of the jar, and it should be, the jar should be free of air, free of air medium, so that it will not, it should be free of air medium. Here we should not be error any on an observation, there should not be air, there should not be anything medium in this jar. We make it empty, vacuum, it is vacuum in, it should be vacuum inside, and we should try to make a sensitive electroscope. Electroscope is function is to determine, to predict the presence of, there is presence of electric charge or not. Now what we can see, the transfer of electric charge. If you take a glass rod, you know that it is a glass rod here, it is a glass rod here, glass rod, and you know the glass rod, when we rub it, when we rub it, it becomes positively charged. When it becomes positively charged, then you try to touch it with this knob. When you try to touch it with this knob of the electroscope, it is the electroscope here, when you touch the electric rod, when you have a touch it with, the positive charges will start to transfer in this rod here, then the electric files it will. Now you know that all the positive charges they begin to flow from the body A. What is body A? It is a glass rod, to the body B. What is body B? It is a metallic knob. Then body C. What is body C? It is a aluminum foil. When this is the flow of, this is the transfer of electric charges from a body having higher concentration of electric charges, that is glass rod, say flow, starts to begin to flow to the metallic knob, then to the metallic wire, then to the hook, we see here a peculiar observation here in the aluminum foil. They you know the like charge, इस foil में भी आप positive charge है, ये भी positive charge, क्योंकि यहाँ पे flow हो गया, transfer of flow of electric charge. अब इन दोनों स्ट्रिप्स में क्या है, positive charge. You know the like charges repel, you know जो लाइक चार्जेस होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, यहाँ एल्युमिनियम स्ट्रिप्स में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, दे विल रिपेल, दे विल मूव अपार्ट, दे विल रिपेल, हियर इज अ रिपल्शन फोर्स. क्या होगा, हम इस तरह का ऑब्जर्वेशन इसमें देखेंगे एल्युमिनियम फॉयल में, इसमें एक किस्म का एंगल बनेंगे, दे विल मूव अवे बाय एन इंक्लाइंड प्लेन. यहाँ पे इस फाइल में हम इस तरह का मूवमेंट देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या थे, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज थे, इसमें भी जो पॉजिटिव चार्ज है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम चार्ज इन द एल्युमिनियम फाइल्स, दे विल मूव अवे. इससे पहले ही ऐसे थे, दे वर हैंगिंग. जब भी इनमें फ्लो हो गए, इसमें भी, इस फाइल में भी पॉजिटिव चार्ज है, इस फाइल में भी पॉजिटिव चार्ज है, दे विल मूव अपार्ट in this way. They will make an angle, they will move, because two bodies with similar charges, they always show the force of repulsion, they form an angle, they becomes inclined to each other. Here this is in this way, you observe that first of all they were hanging in the electroscope. When there is a flow of positive charge by glass rod to the electric, to the metallic wire of an electroscope, to the then to the aluminum foil. What we observe, these aluminum foil will move away from each other. There is repulsive force, repulsion like charge, and they will move away. First of all, then they will move away. Then this is the
दिस इज अ, एक तो हमें इलेक्ट्रोस्कोप से प्रेडिक्ट हुआ है, ऑब्जर्व हुआ है, इट डिटरमाइंस it gives us the detection about the presence of electric charges or not. Then we can say the glass rod is electrically charged as the charges flow to the knob, to the metallic wire, to the aluminum foils. There is a positive charge. Then they would say हमने observe किया है, we observe them in the electroscope, the presence of charge in the glass rod. Now what is in this? It is a transfer of flow of electric charges and determined by the electroscope. Now when the electroscope becomes electrically charged by the glass rod, and we say the observe in this way, what happen? Then this now it becomes charged. What now your electroscope is now your electroscope is now your electroscope is positively positively charged है ना, positively charged. इसको आपने charge अभी कराया glass rod से. Now you touch with your finger. When you touch with your finger, it acts as the earthing. अभी में इसमें term आएगा earthing. Now is the earthing. What do you mean by earthing? Now you are going to touch it with a finger, just finger in your hand. It is your hand, and you are going to touch it with the knob of this, with the knob, metallic knob of the, it is a metallic knob of the electroscope. You are going to touch, all the charges begins to flow into your body. All the charges will begin to flow into your arm. Then that means then this is the all the charges will be lost in your hand, and जो electroscope इससे पहले positively charged थे, अब it becomes the discharged. What is the discharged? Discharged is the process discharging. Discharging क्या होता है? Discharging is the loss of, what is discharging? Important point is discharging is loss of electric charges, loss of electric charges by an electric charged body, by an electric charged shabash, by an electric charged body. Whenever electrical charged body loss electric charges, yes, we can say it is a discharging. Here when we touch it by a finger to the metallic knob, all the positive charge in the aluminum foil, in the metallic wire, in the knob, they will begin to transfer into the, from knob, from the electroscope to your hand. That means you provide to the earthing, you give the earthing जो है, जो तभी तो आपने मैंने बताया, जब मैंने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ाया लाइटिंग प्रोसेस. लाइटनिंग में क्या हुआ, वी इंस्टॉल लाइटनिंग कंडक्टर को आपको पता है, वहाँ मैंने बिल्डिंग में एक मेटेलिक रॉड को इंस्टॉल किया और उसको ग्राउंड दिया, किसके साथ, अर्थ के साथ. अर्थ क्या होता है? अर्थ इज अ ह्यूज स्फीयर and it is a bulk, massive, all the charges lost deep inside the earth, and the process is known as earthing. Earthing में असली क्या होता है? There is a discharging. Here the discharging is by hand. Here the discharging takes place by the hand, by the human body, discharging. And therefore example of the earthing is also discharging. I hope the समझ में आया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय एन इलेक्ट्रिक चार्जेस बॉडी. जब यहाँ पे लॉस हुआ है सारा चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखाई नहीं, देखें इट लॉस्ट. अब यहाँ पे जो मेटेलिक फाइल्स है इट कम डाउन. नाउ जो इनका पोजीशन था इससे पहले, दे विल हैंग डाउन वर्टिकली, जो इससे पहले ही था, क्योंकि ऑल द चार्जेस लॉस. नाउ व्हेन वी रिमूव हैंड, जब हम अब हैंड लगाएंगे, दे विल फॉल डाउन, दे विल कोलैप्स. जो एल्युमिनियम फाइल है ये अपनी जगह वापस आएंगे. मतलब इससे पहले ये थे पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्जड था,
आप ऐसे थे inclined to each other, अब they are moving to its original position, they are vertically down. That means now there is a discharging in electroscope, loss of electric charges. इससे पहले ये क्या था, एक इलेक्ट्रिकली चार्जड, इससे पहले हमारा इलेक्ट्रोस्कोप क्या था, शाबाश, पॉजिटिवली चार्जड, इसी को हम कहेंगे डिस्चार्जिंग. डिस्चार्जिंग इज पॉसिबल when we providing the earthing. What is the earthing? earthing क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट में earthing में क्या है. देखो यहाँ पे जो earthing मेथड है, earthing में क्या होता है, it is involvement of earth. earth की क्या है, involvement. हर एक इलेक्ट्रिकल गैट, हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस को हम क्या, विच कैरी चार्जेस, कैरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, हम उसको क्या देते हैं, शाबाश, हम उसको चार्ज, हम उसको ग्राउंड देते हैं. ग्राउंड आपने, हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंड देते हैं. यही मतलब है अर्थ इन्वॉल्वमेंट. वी आर गिविंग द we make the, इससे क्या होता है, there is a discharging, शाबाश. अर्थ इन्वॉल्वमेंट क्या है, there is a discharging process. डिस्चार्जिंग में क्या होता है, lost of. इस अर्थिंग में क्या होता है, when there is discharging process by means of earth involvement. और हाँ, पूरा ध्यान दीजिए, when there is a discharging process by means of earth involvement, and there is this process known as the earthing. discharging में क्या होता है, this is the loss of electric, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, a loss of electric charge, शाबाश, deep inside the earth, as the earth is electrically neutral. मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थ कितनी बड़ी है, आप ये मतलब इमेजिन कर सकते, हाउ ह्यूज, बल्क, मैसिव आवर अर्थ प्लैनेट इज. ऑलवेज वी गेट the earthing method, we apply this method for the safety, for the short circuiting, to prevent it by the lightning process, जिसमें हमने इंस्टॉल किया है लाइटनिंग कंडक्टर. आपने देखा चर्चेस, मॉस्क में ह्यूज टॉल बिल्डिंग, उसमें हम इंस्टॉल करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर. उसमें भी we facilitate the earthening means here the earthing involvement. हम वहाँ पे एक वायर ग्राउंड करते हैं, वही मेक द ग्राउंड ऑफ द वायर, वही पास ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस. देयर इज अ डिस्चार्जिंग प्रोसेस. डिस्चार्जिंग में लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस हो, वो चला जाता है इनसाइड द अर्थ, वो हमेशा के लिए खो जाते हैं in the sphere of the earth. That means earth is filled by the electric charges. Earth is never filled by the electric charges. This is a vast place, this is a vast sphere where the electric charge diffuses, it is losting, it loses forever. Then this is the earthing method. Earthing is very important as per the precaution, safety is concerned. Here is the what do you mean by electric induction. असल में ये आपका टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो इसको याद रखिए. तो थोड़ा बहुत इसमें इलेक्ट्रिकल इंडक्शन क्या होता है, इंड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इंड्यूस में पैदा होना, इंड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिक पूरा जान दीजिए, इंड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय अनदर इलेक्ट्रिक चार्जड ऑब्जेक्ट, electric charged body. मान लीजिए I will take here this is a metallic sphere here, and it has a insulating rod and it has a disc, basal disc. पूरा जान लीजिए, मुझे ये सिखाना है. Now this metallic sphere, it has a positive charge, yes,
also before it has a negative charge. जब हमने आप ये देखिए मैं I will discuss it is a metallic sphere. It is a metal sphere, and this metal sphere has a base rod. It is insulating. It is insulated rod. इंसुलेटेड रॉड होता है, इंसुलेटेड मटेरियल वो मटेरियल होता है विच डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. हाँ, तो यहाँ पे ये कट होता है. दिस बेस इज आल्सो इट इज अ बेस ऑफ दिस बेस इज आल्सो insulating. It is a rod which hold up this metal sphere. If we take, I have to understand this. क्या होता है, यही इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन जो है देखा गया है इन द क्लाउड्स में. वहाँ पे सेपरेट लेयर बना, ऊपर क्या बना, पॉजिटिव लेयर ऑफ पॉजिटिव एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस. इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन में क्या होता है, वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय अनदर इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी इन दैट, मैं लिखूंगा यहाँ पे, इन दैट ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए इससे पहले क्या था, पॉजिटिव चार्ज भी इस स्फीयर में, नेगेटिव चार्ज. इफ वी टेक द गिलास रॉड हियर, आई टेक द गिलास रॉड क्लोज टू इट, इट इज अ गिलास रॉड. You say that in the glass rod there is maximum number of positive charge, है ना, there is maximum number of positive charge and less number of negative charge. Obviously, in short, this is the, we can say, net effect is of positive charge. Now it is positive charge, glass rod is positive. पूरा जान दीजिए, मुझे ये सिखाना आपको. पॉजिटिव चार्ज when I take, तो इसके पास when I close the glass rod near to this metallic sphere, इससे पहले क्या था, combination of positive and negative charge. When I keep this glass rod, it is one of the another electric charged body. जब मैंने ये लिया नजदीक दूसरे बॉडी के और दूसरे ऑब्जेक्ट के, ये उसमें इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक चार्ज. क्या हुआ, यहाँ पे इसने इसको अलाइन किया है, एक साइड करा दिया. जो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके साइड में आप क्या आएंगे, अगर इस तो सारे के सारे ये जो ग्लास रॉड में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रलाइज कर लेंगे ना, नहीं पॉजिटिव चार्ज को. इस मेटेलिक स्फीयर में जितने भी नेगेटिव चार्ज हो वो इसके नजदीक आएंगे, और इस मेटेलिक स्फीयर में जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ चला जाएगा. तो अब हमने इस ऑब्जेक्ट को, इससे पहले क्या था, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अब हमने इसको मतलब इंड्यूस किया है, इसको भी एक चार्जड बॉडी बनाई. जब भी हम एक चार्जड ऑब्जेक्ट लाया, इसके नजदीक लाया, इससे पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था इसके, अब ये भी बिहेव करता है. अब इसमें भी आ गए इस प्रोसेस के, इस फिनोमेना के कारण ये भी एक मेटेलिक से फिर एक चार्जड बना, वो भी पॉजिटिवली चार्जड बना. इट बिहेव नेगेटिवली चार्जड ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ग्लास रॉड व्हिच इज ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्जड. देन दिस इज द concept of metallic induction as is applying in the, as आपने देखा लाइटनिंग में, क्लाउड फॉर्मेशन में, उस वहाँ पे भी इस किस्म के, मतलब ये क्यों मैंने बताया, ताकि आप वो लाइटनिंग प्रोसेस को समझने के लिए ये एक मैंने इसमें टॉपिक बताया कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता है. टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय अनदर इलेक्ट्रिक चार्जड बॉडी. हियर इज द अनदर इलेक्ट्रिक चार्जड बॉडी, क्या है यहाँ, ग्लास रॉड व्हिच इज पॉजिटिवली चार्जड. इससे पहले मेटेलिक स्फीयर था न्यूट्रली चार्जड, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. अब ये बिहेव करता है इसके साथ नेगेटिवली चार्जड. अब इट बिहेव नेगेटिव चार्जड towards the glass rod, this metallic sphere. This is the electric induction. Induce of electric charge in another object when we bring close to it
another electrically charge. Now इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इंड्यूस हो गया इलेक्ट्रिकल चार्ज. दिस इज ऑल अबाउट दिस. डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एक इसका लास्ट टॉपिक रहेगा, व्हाट इज अर्थक्वेक, हाउ प्रोटेक्टिव मेजर्स वी विल टेक. Earthquake is another natural phenomenon. It is a natural disaster. Anytime, anyway, suddenly it takes place. What device we utilize in having the prediction of earthquake? Before, it is very difficult to predict earthquake in any area. So that we will study in the last lecture about the earthquake and protective measures we should at least take to protect ourselves. I hope you understood about this. Thank you very much.